Okay, so hello everyone, welcome to Anuj Jindal, welcome to RBI 247 session. I hope everything is fine with the audio and the video of this session. Please give me a thumbs up, just confirm everything is fine with the session. Till then, good evening everyone, good evening Afsana, good evening AK, good evening Abhishek, good evening Shreya, good evening Anushka, good evening Ayush, Pragya, Niranjan. Okay, great. Thanks for the confirmation. Let's just begin with our session. Okay, today we have three newses with us. These three newses are related to the RBI only. Okay, ये तीनों ही न्यूज आरबीआई से रिलेटेड है. Let's just discuss each one of them one by one. So for the first one is FIU-IND signed a MoU with the RBI. So basically this is a financial intelligence unit of India. Okay, now this unit signed a MoU, which is a legal, or we can say a mutual agreement with RBI. Now why they have signed the agreement? For combating the issue of money laundering. We all know what do we mean by money laundering. Whenever a person converts its illegal money to a legal money, from black to white money, we call it as money laundering. Okay, now to combat this issue, the RBI has signed a MoU, a mutual agreement, a legal agreement with FIU-IND. Now Financial Intelligence Unit of India is a intelligent unit, or we can say it is a central national agency of India. This is a central national agency of India that what it do? It receives, it process, it analyze, it disseminate the data related to what? Related to suspicious financial transaction. So basically they process the data related to such transaction. Now who provides such data? These data are being provided by the regulated entities and the reporting entities. Now who are these reporting entities? These are banks, NBFCs. They are the one who provide FIU with all the data in order to see whether the given transaction is suspicious, because they find this transaction suspicious in nature, and that is the reason that they give such data to the FIU so that they can check whether there is some we can say a problem is there related to the money laundering or not. I hope इतना clear होगा. तो news बहुत simple है. So both the unit, that is RBI and FIU, signed a MoU in Delhi on April 17, 2021. Now the aim is to strengthen the compliance with the Prevention of Money Laundering Act. ठीक है? Now this Money Laundering Act was enacted by the Parliament in 2022. But if I talk about this unit was established by Government of India in 2004. So after this enactment of this act, this unit came in. So that the act was there, but who is going to ensure at the ground level that whether the things are happening or not? Who will check? Who will monitor? So FIU was later established by the Government of India. So this is how you are going to remember the dates of its establishment. So question कहाँ से आ सकता है? First question आ सकता है कि RBI ने किसके साथ साइन किया है MoU. सेकंड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FIU-IND, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, या फिर व्हाट इज द एजेंडा ऑफ एस्टेब्लिशिंग सच यूनिट. ओके, नाउ बोथ ऑफ देम हैव साइंड अ agreement, right? The agenda is this and this.
tell what is the establishment, we can say enactment year of this Prevention of Money Laundering Act, because after this enactment of this act, following such act, this unit is being established by the government of India. So there is a connection between these three things. So you have to remember the factual points here. ठीक है, यहाँ तक clear है? Okay, now I have put the things here also for you. So this was enacted in 2004 under, so this is under what department? Department of Revenue of Ministry of Finance, Government of India. Now who is the legal authority here? So the function under the Prevention of Money Laundering Act. Again, there is a direct relation, I have already told you. So this is a national agency responsible for receiving, processing and disseminating the information. Disseminating means sharing the information among the public for the same, relating to the suspicious financial transaction with the focus of fighting with the money laundering and terrorist financing. Some of the key points of this MOU. So both parties have signed the, we can say, agreement, and there are some, we can say, initiative that both of them have taken. So what are these points? This says that both the units, I'm going to note both of them as units. Okay, so both the units will appoint a nodal officer and an alternative nodal officer for each side for coordination. ठीक है, तो RBI का एक nodal officer होगा, FIU का nodal officer होगा. Both will deal with each other in order to have a smooth process of such initiative. Both will share the relevant intelligence data with each other, laying down the procedure of how they are going to regulate or reporting entities should report under the PMLA. So reporting entities मैंने आपको बताया कौन है, banks हैं. Now how banks are going to report for the same data to these two organizations? So that procedure is going to be standardized under such MOU. Training and outreach program for the regulated entities. Now these regulated entities and the personnel working in there, they are going to be trained by these both organizations, so that they can know that what is the importance of regulating such suspicious financial transaction, how they can impact their banking procedures, and how they can have a big impact on the economy as well. So we will tell the importance of conducting such processes at their own level. So such training program must be conducted by both of the unit here. Upgrading the capabilities of AML and CFT. ठीक है, वो कह रहे थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैपेबिलिटीज जो है, यहाँ पर किसको कह रहे थे? इंटरनल कैपेबिलिटीज ऑफ द बैंक्स, उनको वी आर गोइंग टू अपग्रेड. अब वो अपग्रेडेशन कैसे हो सकती है? प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके हो सकता है, हम उनको डिजिटलाइज कर सकते हैं, we can improve how they are working right now. These kind of things are being we can say included in such REs. Assessment of money laundering and risk in the financial subsectors. So they are saying कि we are going to assess both the units are going to assess the same transactions and the risk for every financial subsector. Okay, identifying red flag indicators. Now they are saying that we are going to give you what are the red flag indicators where you can identify that whether this transaction is suspicious or not. So these indicators are given by RBI and this unit. Both of them are going to tell the indicators that are there. Then monitoring and supervision of the compliance by the RBI regulated entities. So both will look after the monitoring of such facts, कि whether these reporting entities are following the procedure that are being laid down by us or not. Ensuring compliance with the international standards of AML and CFT. ठीक है, तो एक तो जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ देखते हैं, we ensure that we are not leaving any kind of things, because international standards, they have already gone through a lot of changes.
Okay, they have identified the loopholes, they have find a lot of things already, but if we consider those international standards, we would be able to better recognize these points. Okay, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपने स्टैंडर्ड को, अपने रूलिंग को मैच करना है, सो दैट वी आर ऑल्सो नॉट लीविंग एनी काइंड ऑफ लूप होल्स. Conduct quarterly meetings to exchange the updates and review issues. ठीक है, so both the units and the committees that are going to be held, so basically all the personnel which is related to the FIU and RBI are going to sit together quarterly for the meeting, and they are going to review and see what is the upgrade, or we can say what is the updation regarding the same. So this was related to the first news. Now the first news was very easy. Now the second one is also very easy. It says migration to .bank.in domain. ठीक है, डोमेन क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट के पीछे देखते हैं इट्स रिटन लाइक .in और .com, ऐसा ही होता है. ऐसी बैंक्स की भी वेबसाइट है, उनके पीछे भी क्या लिखा होता है, .com या फिर .in, कुछ ना कुछ होता होगा, बट these are very common in nature. Okay, now the customers or the individuals who get messages, or we can say notification from such websites, the customer believing that this notification is from the bank's website, they click on such, we can say, links, and they enter into a fraud. ठीक है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके अकाउंट से सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, निकाले जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट एंटर ऑल द, दे जस्ट अग्री टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू सच बैंक वेबसाइट. उस केसेस से बचने के लिए आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड bank.in डोमेन. अब ये डोमेन कौन लगा सकता है, ओनली बैंक्स, एंड फॉर दिस बैंक हैव टू गो टू IDRBT. अब ये IDRBT क्या है, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. लिख लेते हैं इसे, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. अब ऐसे तो नाम ही बता रहा है दैट दिस इंस्टीट्यूट इज स्पेसिफिकली लुक्स एट द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी. whatever technology currently is being used by the banks, they are going to research it more, they are going to develop it more for the usage for the banks. Now this IDRBT will take care of this domain, and bank have to ask this institute before they use this bank.in domain. So basically these banks have to register with this unit in order to get this domain. With this they are going to authenticate that whatever website is being used by the customer with this domain is safe and secure. So they are reducing the risk of cyber threat. Okay, now this institute was established by RBI in 1996. Now this year is very important, and this was established by RBI in 1996. What it looks after, it ensures that whatever technology is being there in the market, the banks are using the developed and the researched technology. Suppose there is a new technology, AI, okay, blockchain technology is there, so whatever technology is there, they are going to develop it more for the banks, how they can use it, how they can efficiently use it, and how they can make it better and better for the banks. Okay, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, the bank.in is for the banks to combat the increased chances of the fraud. I have already told you, and there is one more thing which is fin.in. This is for the NBFCs, that is non-banking financial unit. Now they have nothing updated on this, but you should know that fin.in for the NBFCs. Now the initiative is aimed at reducing the cyber threat by strengthening the cyber security framework and enhancing the public confidence in the digital banking and the payment system. So the agenda is same, to make it more and more stronger, resilient enough to deal with any kind of crisis.
Now, how they are going to deal with? So, bank can contact the IDRBT at this website to initiate with the registration. Once they have registered, they can just use this domain. IDRBT shall guide the banks on various aspects related to the application process and migration. How they can migrate to this new domain. The IDRBT will going to conduct the meeting for the same. They will tell them all the processes, how you have to send the application, how we will process the application, what are the eligibility criteria, or such thing will be taken by the IDRBT. Now, what is the deadline? The deadline is 31st October 2025. Now, this deadline is very important. Okay, they have set a one single deadline that before this date, every bank should have this domain in their website. So this is very important. Okay. Okay, here we are done with the second, we can say, news as well. So one thing I haven't told you here is IDRBT, the only registrar authorized by the NICSI under MITI. Now they are talking about the NICSI. NICSI is what? NICSI is National Internet Exchange of India. Now this was established in 2003, which is a non-profit organization. अब ये क्या डील करती है? इट लुक्स एट द, एज अ नेम टेल यू, इट्स अ इंटरनेट एक्सचेंज. ठीक है, इंटरनेट का जो डोमेन है .in, ये उसे मैनेज करता है. Okay, so this is the, we can say, one of the important unit that deals with the internet exchange, and they are going to deal with IDRBT and NICSI as well, which works under what? MITI. Now MITI is Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है, which is a part of Government of India. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके, अब हम आते हैं ये वाली न्यूज पर. आपको पता होगा लास्ट जो हमने प्रीवियस अपना जितना भी सेशन लिया था उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, अमेंडमेंट्स टू LCR डिस्कस किया था, राइट? ये जो हमने डिस्कशन किया था इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आई थी वो ये थी. नाउ द RBI रिलीज्ड वन मोर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द सेम. It named it as Basel III framework on liquidity standard, LCR. Now there was a lot of confusion among students. They said कि ये वाली आपने guideline करवा दी और ये वाली नहीं करवाई. No, it's not like that. Basically, both the guidelines are same. Okay, बस उनके नाम अलग है. This were released in the notification section of the RBI. Okay, now this was released in the press release. ठीक है, दिस वॉज रिलीज इन द प्रेस रिलीज. ठीक है, तो दोनों ही रेगुलेशंस जो हैं सेम है. ठीक है, कहीं आपको डाउट ना हो दैट यू हैव मिस्ड वन नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव राइट टू विजिट द RBI वेबसाइट. इट्स ओके, ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है. तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव इंक्लूडेड दिस ऑल्सो. ठीक है, तो हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि हाँ भी हमने कंप्लीट नहीं किया, कुछ क्लियर नहीं किया, क्योंकि साइजेस दोनों के बहुत डिफरेंट है. इसमें कितना बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसमें कितना छोटा सा दिया हुआ है. ठीक है, तो in order to ensure that everything is same, everything is there with you. ठीक है, तो पहला जो की चेंज था वो था रिटेल डिपॉजिट्स के ऊपर क्या बढ़ा दिया इन्होंने? रन ऑफ फैक्टर बढ़ा दिया. अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी चीजें आपको, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें. अगर आपको समझ नहीं है यू कैन वॉच अवर दैट सेशन. ठीक है, तो 2.5 से एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था. तो जितना भी करंट चल रहा था उससे 2.5 ज्यादा बढ़ा दिया. अगर 5% है फॉर द स्टेबल डिपॉजिट्स तो 7.5 हो गया है. अगर 10% है फॉर द लेस स्टेबल डिपॉजिट्स तो वो कितना हो गया? 12.5%. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि करंट कितना था, प्रीवियस कितना था और अब करंट कितना हो गया है. नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सेम ट्रीटमेंट अप्लाइज टू द अनसिक्योर्ड होलसेल फंडिंग फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स. ठीक है, अब स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स जो हैं, स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, वो कह रहे हैं इनके साथ भी सेम ही तरह से डील किया जाएगा. अगर उनके स्टेबल हैं डिपॉजिट्स तो 7.5%, अगर अनस्टेबल हैं. अब स्टेबल अनस्टेबल का क्या मतलब है? स्टेबल का मतलब है कि वो कम निकलवाते हैं डिपॉजिट्स, रेयरली निकलवाते, इतनी जल्दी जल्दी नहीं डिपॉजिट निकलवाते. अनस्टेबल क्या है? हल्की सी न्यूज आई नहीं और डिपॉजिट्स ये वाले अकाउंट्स में से बहुत जल्दी निकलते हैं. ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर अनस्टेबल डिपॉजिट्स. दूसरा की चेंज क्या था?
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कैसे करेंगे, करंट मार्केट वैल्यू में अब हम वो करेंगे, वैल्यू करेंगे, बट देर इज अ हेयर कट इन्वॉल्व। हम उन्हें प्रॉपर मार्केट वैल्यू पे नहीं रखते हैं, बिकॉज मार्केट वैल्यू टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज fastly, and that is the reason we are going to have a haircut. So basically this haircut means we are going to reduce the market value to some extent, say 1% 2%, depending upon कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टेन्योर कितना है, किसने इशू किया है, सेंटर ने किया है, स्टेट ने किया है, उसके हिसाब से क्या डिसाइड होती है, परसेंटेज डिसाइड होती है। अब ये परसेंटेज में हमें नहीं जाना, बिकॉज दिस इज टू माइन्यूट, इतना माइन्यूट डेटा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर रिस्पेक्टिव क्या लगेगा, हेयर कट लगेगा एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, विच इज मार्केट वैल्यू इन दिस केस। तीसरा चेंज क्या था, कॉलेबल डिपॉजिट्स। अब कॉलेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स आर लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट मींस वन कैन नॉट कॉल, ठीक है, वो वापस नहीं ले सकते इन डिपॉजिट्स को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर ये नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स को कोलैटरल में रखा है किसी पर्सन ने, व्हेन दे टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, उन्होंने कहा आप मेरी एफडी रख लीजिए, फिक्स डिपॉजिट रख लीजिए एज अ कोलैटरल, और आप मुझे लोन दे दीजिए 5 लाख का। तो इन दैट केस दे आर सेइंग कि आपका ये जो कोलैटरल है ना, आपको इसके लिए भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक रन ऑफ फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो कोलैटरल है, जो कि इस केस में क्या है, एफडी है, जो कि क्या है, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है। वो कह रहे हैं हम इस नॉन कॉलेबल डिपॉजिट को भी क्या डील करेंगे, कॉलेबल डिपॉजिट, यानी कि इट कैन बी कॉल्ड बाय द पर्सन अंडर क्राइसिस, बिकॉज द सिचुएशन आर अनसर्टेन नाउ, and that is the reason, considering the facts into consideration, they are saying that non callable deposit will be also considered as callable deposits as of now, ठीक है। तो they are saying now will be treated as callable for the LCR purpose, तो LCR जितना लगेगा वो सेम ही लगेगा, that is mentioned here, ठीक है, यहां तक क्लियर है। then there is a key change for, हमने इसके बारे में पढ़ा था, other regulated entities, अदर लीगल एंटिटीज और नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, जैसे कि कोई ट्रस्ट हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई एचयूएफ हो गया, ठीक है। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी तो क्या करती हैं, डिपॉजिट्स करवाती हैं पैसे बैंक के साथ। तो पहले क्या होता था, 100% रन ऑफ फैक्टर रखते थे, बट दिस वाज रिड्यूस टू 40%। तो दिस हेल्प्ड बैंक विद फ्रीइंग अप अ लॉट ऑफ मनी विद देम, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स। तो बेसिकली ये क्यों बता रहे हैं, ये बता रहे हैं दैट स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज। आप ये मत कंसीडर कर लीजिएगा कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हम उन्हें कंसीडर कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, नो, उन्होंने स्पेसिफिक यहां पर कर दिया कि स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज दिस एलसीआर नॉर्म्स के हिसाब से ही उनको डील किया जाएगा। उनके स्टेबल हैं डिपॉजिट्स, अनस्टेबल हैं, और उसी के हिसाब से अनस्टेबल फैक्टर्स, उन्हीं के हिसाब से एलसीआर नॉर्म्स लगेंगे, रन ऑफ फैक्टर लगेंगे। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगेन सेम ही है उसकी जैसी, April 1, 2026, दिस इज एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स, what it not applies to payments banks, RRBs, local area banks. So I hope it is clear. So we are done with today's session. So let's just discuss the question answer. Recently RBI announced the launch of bank.in domain for the banks. For operational guidelines, banks are required to complete the migration to this domain by dash, and for registration assistance they must contact dash institute. So what is the right answer? Right, B is the right answer. B is the right answer. How C is the right answer? Why you guys are saying C? अच्छा, C is not a right answer. उन्हें डील तो IDRBT से ही करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो इन्हीं के साथ होगी, उन्हीं से ही असिस्टेंस भी लेंगे, ठीक है। निक्सी बस हेल्प करेगा IDRBT को फॉर दिस। सो B is the right answer. Recently FIU
IND, RBI signed a MoU to enhance the anti-money laundering and combating the financing of terrorism compliance under the MoU signed in April 2025 between these two entities. But which of the following activity is not part of their agreed cooperation? So C is the right answer. Why D is the right answer, everyone? Why are you saying D? अपग्रेडिंग द कैपेबिलिटीज, ये तो है, इसका पार्ट है। आज ध्यान से नहीं पढ़ रहे आप सब लोग, तबीयत मेरी खराब है और आप सब ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर, डेवलपिंग जॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस। डेवलपिंग जॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर की पॉइंट्स, हम कह सकते हैं ये नहीं है उनके एमओयू का एक पार्ट, ठीक है। Question number 3. Recently, RBI revised the LCR guidelines under the Basel III framework to improve the liquidity resilience of banks. According to the revised guidelines effective from April 2026, which of the following categories of depositors will now interact 40% run-off factor rate instead of 100%? ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, but still for your revision, let's check. Okay, D is the right answer. Good everyone, D is the right answer. Here we are with the last question. Okay. As per the RBI's updated guidelines on LCR issued in April 2025, what is the new run-off rate applicable to less stable retail deposits that are enabled with the internet mobile banking facilities? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं कि कितना रन ऑफ फैक्टर है फॉर द लेस स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स? ठीक है, D is the right answer, that is 12.5%. Good everyone, good. So here we are done with the session today. आज की न्यूज़ बहुत ही सिंपल थी बिकॉज आज हमने दो सेशन इकट्ठे ले लिए. सो आई जस्ट वांट कि आपको ज़्यादा ना न्यूज़ मिले और आप उसे डाइजेस्ट भी ना कर पाओ, समझ भी ना आए. So I've kept easy news for you, for all of you. So I hope you have enjoyed the session. I hope the session was fruitful for you. We are going to ensure that whatever news is left, we are going to cover it in our upcoming session. Don't worry for that. And till then, goodbye. Best of luck for your examination. Keep on preparing for the finance current affairs. Okay. So bye bye everyone.